Hi and a very good morning to all of you. Welcome to Adda 247. This is Arushi here, your mentor for current affairs for RBI, SEBI, NABARD and all the regulatory body exams that you must be writing. And yes, don't forget to join me in my session today in the evening. जहाँ पे मैं आपसे अब we are going to start off with what? Monthly current affairs revision. तो जून मंथ के जितने भी important current affairs होंगे, I will be discussing that with all of you. And focus रहेगा one liners पे ज़्यादा because yes, general awareness merit section है and it is very very diverse and I think one liners are the best way to revise our current affairs, especially for a merit section like general awareness. One liner ही आते ही हैं, so we'll be focusing on that. Other than that, yes, conceptual भी होगा, government schemes भी होंगी, everything we'll take together just one by one, step by step, but at the right pace so that before your exam आप सब कुछ cover भी कर लो, revise भी कर लो. So just stay chill. Adda's got your back here in as far as general awareness is concerned. Okay. So yes, with a new, I've come up with a new initiative जहाँ पे मैं सबसे पहले आपके साथ लेकर आऊँगी key announcement issued by the government of India in public interest. इसको कहते हैं जनहित में घोषणा या जनहित में जारी, जो हम लोग usual अपना कहते हैं, राइट. सो व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? मैं ये सेक्शन क्यों लेकर आई हूँ? सी, एज एस्पायरेंट्स, एज लाइक पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, कभी कभी ऐसे की अनाउंसमेंट्स में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. बट अदर देन दैट, we are reading general awareness on a whole, so I think some of the important issues you should already be aware of. भले ही वो एग्जाम में आए या ना आए, आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही होनी चाहिए. बेसिक मिनिमम तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं दिखाती हूँ कैसे. इस बार तो एक ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे वो लगा वो ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला है कि सैनिक स्कूल्स आर नॉट द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ अग्निपथ स्कीम. नंबर वन, देखो इसमें दो अनाउंसमेंट छुपे हैं. नंबर वन, पहली बात यह है कि सैनिक स्कूल अग्निपथ स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और ऐसी कोई भी स्कीम मैंडेटरी नहीं है जो यूथ को फोर्स करे कि वो आर्मी ज्वाइन करे. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कहे हैं. सैनिक स्कूल इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है अग्निपथ स्कीम की. सैनिक स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करता है एनजीओज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टनरशिप के साथ, जो कि यूथ को एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बस. उसके अलावा दूसरी स्कीम ये है कि अग्निपथ स्कीम एक कॉन्स्क्रिप्शन स्कीम नहीं है. कॉन्स्क्रिप्शन स्कीम वो होती है जिसमें यूथ को कंपलसरी सर्विस देनी होती है आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को, किसी भी कंट्री की. और अग्निपथ स्कीम वो स्कीम नहीं है. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जितनी भी कंट्रोवर्सी थी उसको क्लैरिफाई करते हुए दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बोला है. ठीक है. अब इससे इम्पोर्टेंट क्या निकल के आ रहा है एग्जाम के लिए? यस, सैनिक स्कूल्स कौन होता है, क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको अकेला इम्प्लीमेंट करता है. वो पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड होता है. सो लेट मी टेल यू, सैनिक स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टनरशिप दोनों पे बेस्ड होते हैं. ऑफ कोर्स एनजीओ के साथ या सीएसआर इनिशिएटिव्स के साथ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप में रन करते हैं. एंड उनका एम यही होता है, स्पेशली जो आर्मी पर्सनल के जो बच्चे हैं उनको स्कूलिंग प्रोवाइड करना. एंड दैट्स इट, आई थिंक. So yes, after taking note of the important announcements for the day, let us go back to our basic MCQ mode. MCQ mode में सबसे पहला important question, Antarctica bill. Antarctica bill Ministry of Earth Sciences ने launch किया है. Who is the Union Minister of Earth Sciences? Let me know in the comment below. Okay, Ministry of Earth Sciences ने Antarctica bill launch किया है. उसका main aim या main motive क्या है? पहला ऑप्शन, एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना. यस, दिस इज करेक्ट. रीजन के डीमिलिटराइजेशन. अब एंटार्क्टिका जैसा रीजन मिलिटराइज क्यों हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी? आर्कटिक समझ में आता है, मैं आपको बताऊंगी कि आर्कटिक क्यों मिलिटराइज हो रहा है, एंटार्क्टिक क्यों मिलिटराइज हो रहा है. कैन एनीवन टेल मी अबाउट इट? सी, एंटार्क्टिक एक कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट भी है और no country has an authority over Antarctic. कोई भी कंट्री के ऊपर, कोई एक सिंगल कंट्री के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है. फ्री कॉन्टिनेंट है वो. ओके, बट अदर देन दैट, उसी चीज की अपॉर्चुनिटी उठाते हुए कंट्रीज लाइक चाइना, दे आर ट्राइंग टू मिलिटराइज
उसके ऊपर अपनी सॉवरेंटी असर्ट करना, एंड देन ऑल्सो वो साउथ पोल रीजन में. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट में जो भी चेंज आता है सबसे पहले हमको एंटार्क्टिक में दिखता है. इकोसिस्टम वहाँ का बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है. ओके और जब भी अब मान लो यूएस और साउथ कोरिया, मान लो एग्जाम्पल कर लो एक सिचुएशन यूएस और साउथ कोरिया. अब यूएस ने साउथ कोरिया को एक वेपन दिया थार्ड करके 2016-17 में एक वेपन दिया था. ठीक है, वो वेपन दिया तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए. यूएस चाइना साउथ कोरिया का कोई जॉइंट मिलिट्री, या फिर साउथ कोरिया और चाइना का कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ. ठीक है, या फिर किसी और ने, यूएस और इंडिया का नेवी क्वाड्रिलैटरल ग्रुपिंग है, यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया, उनका मालाबार एक्सरसाइज सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. उसको उसके बाद चाइना ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया फॉर सेल्फ डिफेंस. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर, जिसकी वजह से यस मिलिटराइजेशन का काफ़ी स्कोप है इन एंटार्क्टिक रीजन, और उसी को ये एम करता है. स्पेशली इसका अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करो तो दिस इज टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दैट रीजन. सो वी ऑलरेडी नो कि चाइना का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स में ही. ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है इस पूरे वर्ल्ड में, एंथ्रासाइट कोल, एंड बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स रिच है, एंड चाइना इंटरफेयर्स अ लॉट इन ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स. सो ऑफ कोर्स New Zealand, Antarctica, they all obviously are under a perpetual threat. Okay. Nuclear tests से रेड होना, एक्सपोजर करना, एंड माइनिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज. सो ऑफ कोर्स अंटार्कटिका इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. पुराना कॉन्टिनेंट है, ऑफ कोर्स सारे कॉन्टिनेंट्स पुराने, बट अंटार्कटिक इज एक्चुअली जो पर्माफ्रॉस्ट होता है किसी भी आइस कॉन्टिनेंट का, पर्माफ्रॉस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स होते हैं जो कि अभी अंटार्कटिक में डिस्कवर हुए हैं. कोल एंड सबसे ज़्यादा तो नेचुरल गैस रिजर्व्स एंड क्रूड पाया जाता है. तो यस माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ का स्कोप भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. एंटार्क्टिक बिल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी लॉन्च किया है, उस एंटार्क्टिक बिल के ये इतने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. अदर देन दैट बिल ऑल्सो प्रोपोगेट्स इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी, IAA, इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस टू इंक्रीज इंडियाज एक्सपेडिशन एंड साइंटिफिक रिसर्च इन द एंटार्क्टिक रीजन. ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के पास ऑलरेडी 2 रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिक रीजन में विद द नेम ऑफ मैत्री एंड भारती. मैत्री एंड भारती करके 2 इम्पॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन हैं इंडिया के एंटार्क्टिक में. ठीक है, एक यहाँ पे है, that is in the सनावे एक जगह है, वहां पे मैत्री है इंडिया का रिसर्च स्टेशन, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे भारती एंड मैत्री 2 इम्पोर्टेंट रिसर्च स्टेशन हैं इंडिया के. ओके सो यस ये सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए. अदर देन दैट टूरिज्म बढ़ाने का भी काम करेगा इंडिया एंटार्क्टिक बिल. इंडिया एंटार्क्टिक बिल विल ऑल्सो फैसिलिटेट द टूरिज्म ऑफ इंडिया टू एंटार्क्टिका, एनकरेजिंग मोर क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज पीपल टू. ऐसा नहीं कि एंटार्क्टिक में कोई भी पॉपुलेशन नहीं, 0 है, वहाँ पे है लोग. क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज, साइंटिफिक एक्सपेडिशंस, क्लाइमेट चेंज रिसर्च. तो क्लाइमेट में कोई भी चेंज आता है उसका सबसे पहला इंडिकेटर, बहुत सारे बायो इंडिकेटर्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के, बायोलॉजिकल होता है, फिजिकल होता है, ज्योग्राफिकल होता है. तो ज्योग्राफी में अगर बात करी जाए तो क्लाइमेट चेंज में कोई भी बड़ा चेंज आता है या फिर ट्रांजिशन आता है तो सबसे पहले आप पोल्स की तरफ जाओ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक. तो वी शुड नो दैट एंटार्क्टिक काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लेकर आता है, जैसे बड़ी बड़ी आइस शीट एंड आइस शेल्फ मेल्ट हो जाती है, कोर आइस शीट से वो टूट के बिखर जाती है. तो वो सारे इवेंट्स, वो सारे फिनोमेना डिसाइड करता है, यहाँ पर इंडिकेट करता है कि
स्पीड क्या है क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। उसके अलावा फिशरीज एंड रिसोर्सेज इन एंटार्क्टिक वाटर। तो एंटार्क्टिक साइड में, गुड मॉर्निंग अनंत, सो एंटार्क्टिक रीजन में फिशरीज दैट इज क्रिल फॉरेस्ट। क्रिल एक स्टेपल फूड है फॉर ऑल द कंट्रीज इन द आईसी रीजन्स, जो पोलर रीजन्स के पास रहते हैं वहाँ पे एक स्टेपल फूड मिलता है क्रिल। तो क्रिल फिशरीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंटार्क्टिक रीजन में। वहाँ पे केल्प्स फॉरेस्ट, केल्प अंडरग्राउंड फॉरेस्ट हैं जो कि ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि एंटार्क्टिक की आइस को इंटैक्ट और स्टेबल रखने के लिए उसके अंदर का जो नीचे पानी होता है, आइस शेल्फ के अंदर जो पानी होता है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सॉल्टी, it is very very salty, so that prevents the ice from melting and breaking down from the core or within. Okay, see Anantha, the mode of this class will be bilingual. I'll speak English as well as I'll speak Hindi. So what we have decided to come up with, whatever I'll speak in English, I'll translate it to Hindi so that all the your Hindi medium peers are not left behind. Okay. So yes, Himadri Research Station. Where is Himadri Research Station located? Can you tell me from the comments below? Himadri Research Station कहाँ पे located है? See, Bharti and Maitri, they are both in Antarctic. Himadri Research Station is actually in the Arctic Ocean. Himadri Research Station is in the Arctic Ocean. Where in the Arctic Ocean? Actually, it is in Norway में एक island है Svalbard. We all must have heard about the ice storage in the Svalbard, a giant ice storage where all the important food grains and all the important food grains and vegetables, the seeds, everything is stored in this giant granary that is located deep inside, deep under the ice. तो एक रेफ्रिजरेटर टाइप का है, for years ahead kabhi bhi world mein, whenever there is a potential food crisis in the world, to face that, to tackle that, this Svalbard granary has been set up over here. So yahan pe hi India has also set up its own research station regarding what? To study the impact of climate change on the polar region, to study the overall, not only the polar region gives us the impact of climate change, but polar regions are very rich ground to understand what is happening in the outer space as well. We can study Earth's magnetic field from the polar region. We can study the significance of northern lights and southern lights. You all must have heard about Polaris, Ursa Polaris, जो कि ऑस्ट्रेलिया में दिखती है, नॉर्वे में भी northern lights दिखती हैं. So yes, it offers a lot of scope for research, scientific research and expedition. सो यस, स्वालबॉर्ड जो कि नॉर्वे में है, यहाँ पे हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है इंडिया का. सो ओटावा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ओटावा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू आर्कटिक. Now, since we are studying about Arctic and Antarctic, we should also know about these declarations. Most probably as one-liner MCQ, it can come in the exam. What is Ottawa Declaration related to? What is Madrid Protocol related to? So let's just have a very brief overlook at what it is. Ottawa Declaration is basically members of the, it declares these many countries as members of the Arctic Council. So what is Arctic Council? Arctic Council is basically an intergovernmental organization जो कि Ottawa Declaration से बनाया गया है 1996 में. So all the member countries of the Arctic Ocean, that is with the within the intergovernmental organizations, all the countries, they actually collaborate and cooperate on issues related to the Arctic, related to the continent of the Arctic. So let me tell you guys another very important fact, that an international northern route has been discovered a few years ago in the Arctic Ocean, because the ice sheet melt has been the ice sheets over there has been melting. The route from Russia to Canada, suppose करो ये world है, suppose this is the world, okay, this is the Russian region, this is Europe, this is Africa, this is India,
Okay, this is China and Japan and all those facts, and this is यहाँ पे आ गया हमारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, अब मान लो रशिया से अगर कभी कनाडा जाना हुआ, राइट, सो व्हाट, यहाँ पे पहले आर्कटिक सर्कल पड़ जाता था, आर्कटिक ओशन पड़ जाता था, तो व्हाट रशियंस यूज्ड टू डू, यहाँ से या ईदर थ्रू चाइना और ईदर थ्रू हियर ईस्ट रशियन एरिया, यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना पड़ता था, एंड देन दे यूज्ड टू गो टू द आर्कटिक, व्हिच यूजुअली took around a lot and lots of time, a lot of energy. Okay, but ever since ice sheet have been started to melt in the Arctic, the Russians have found a way to shorten this route from the northern area as only. Northern area से ही, Arctic Council से ही Russians can go to Canada, they can trade with the US. And probably that is one of the reasons why Russia is so much after Ukraine. You may not know that, but जो Baltic countries हैं वहाँ पे रशिया का भी एक छोटा सा हिस्सा आता है, so that it can get access to a sea route, a shorter sea route to the North Sea as well as to the US, to the Canada, okay, and all the countries in the Pacific, in the Atlantic Ocean, because North Sea again it is a very oil rich area, Brent crude oil के बारे में आपको पता ही होगा, so that comes from North Sea. So Russia does have vested interest, and Arctic Circle की अगर बात करी जाए तो lots of methane and natural gas reserves have been found in Arctic, and it is said that आगे चल के global warming और बढ़ी and ice sheet और ज़्यादा melt हुई तो all the natural gas reserves, all the methane, all the crude reserves stored in the permafrost of the Arctic Circle, it will get exposed, and potential exploitation, there is a lot of potential for exploitation over there, and that is why major countries, not only Russia but these many major countries have vested interest in the Arctic Circle. And जब हम लोग एंटार्क्टिक की बात करें तो we should actually also be talking about this. इंडिया का स्टेटस क्या है यहाँ पे? इंडिया has an observer status. India has an observer status in the Ottawa Declaration. So I hope learning about these things has been quite interesting for all of you. Other than that, yes, it is actually also important to know. Okay, Madrid Protocol किससे related है? To which of these following Madrid Protocol किससे related है? Is it related to climate change? Financial technological inflow, climate neutrality से related है? Protection of the Antarctic Treaty, Fourth Industrial Revolution, या फिर BRICS nation. So Madrid Protocol is actually related to protection of the environment in the Antarctic Ocean. So जैसे Ottawa Declaration is related to Arctic Circle, Madrid Protocol is related to Antarctic Circle. Okay, so that is the purpose of this question, to make you aware of these one-liners. So Madrid is to Antarctic, and Ottawa is to Arctic. Okay. So yes, these are some of the important provisions. This is actually the correct answer. About Madrid Protocol. अब आते हैं economy के कुछ important questions पे. Okay, I think yes. Now see, today's session is more important and related to government scheme. Some of the very important government schemes. See, Press India Bureau, that is the official Government of India notification website, or the news press has actually been publishing the mid-year performance of all the important government schemes that are being implemented in the country. So let's just go through them one by one. I have already told you the protocol to remember all the important government schemes from the exam point of view. You should remember the year of its launch. कौन सी ईयर में लॉन्च हुई थी? नंबर 1. नंबर 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उन गवर्नमेंट स्कीम्स का? Number 3, who are the beneficiaries? Of course, beneficiaries and eligibility criteria. उन beneficiaries को identify कौन करता है? Whether it's the state government or the central government. Usually beneficiary identification का काम या फिर उसका जो burden है वो state government के ऊपर जाता है. Okay, now let's just start with the very first question. Ayush Mark Certification Scheme. Ayush Mark Certification Scheme was launched in which of the following years? Do let me know in the comments below.
Ayush Mark certification scheme was actually launched in the year 2009. Ayush Mark certification scheme was launched in 2009. 2009 में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी प्रोडक्ट, सो इन दोनों ड्रग्स को मार्केट करने के लिए दैट दे आर जेन्युइन आयुष प्रोडक्ट स्पेशली इन द इंटरनेशनल मार्केट, it was launched the Ayush Mark certification scheme. Other than that, they are based on WHO's GMP, that is Global Medicinal Practice Guidelines. WHO guidelines निकालता है for all types of medicines, allopathic, homeopathic, herbal, आयुर्वेद, यूनानी सिद्धा. So उन्हीं की guidelines पे ये दोनों hallmarks based हैं. तो जितने भी आयुर्वेदिक and herbal medicines and treatments हैं, they all already come with an Ayush tag. One is the standard mark and one is a premium mark. So both these two are quite important. Standard mark and premium mark दोनों के अलग अलग objectives होते हैं. Standard mark is more for standardized generic drugs and premium mark is mostly for drugs, exportable drugs जो होती हैं, जो specialized care के लिए बनाई होती हैं. So that is the key difference here. Next, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कब लॉन्च हुआ था? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, the aim of the scheme, that is कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, is to enable all the adolescent girl students, जितने भी adolescent girl students हैं who have actually dropped out of school, that is main target कौन है? Main target audience of this scheme is basically 11 to 14-year-old girls. 11 to 14-year-old girls हैं who have actually dropped out of school because of certain reasons, like because of loss of livelihood of their bread earners in the family, because of COVID, right? Because in the time of COVID, or because of lack of awareness about the menstrual hygiene. Because this is actually the age when the girls enter their cycle thing, okay? So because of lack of awareness and lack of access to all the facilities, to all the important facilities, lack of access to proper health care, proper medicines, all these factors are involved. And usually what happens, what a trend has been seen in, especially schools in rural areas, semi-urban areas, government aided private schools, जो कि they are not very affluent, people, or especially girls attending that school, they attend it till the age of 10, 11, till they hit their puberty, and after that they drop out because they are not just aware, or they don't have access to the medicinal facilities that are required. So the scheme is actually an incentive based scheme. Awareness program होता है. The scheme aims to set up campaigns at various places, especially those places जहाँ पे dropout rate ज़्यादा है. So there is an awareness campaign that is ₹1,000 per how many girls you are able to bring back to school. So it is an intensive mass media and awareness campaign that is focused on results. Okay, focused result oriented. जैसे आपको target दे दिया गया है that you have to bring so many girls back to school and आपका target इतना है. Okay, so that is the case over here. 11 to 14-year-old girls को target करते हैं, and इसका जो launch year है that is 7th of March 2022. 8th of March I've written it on purpose because of course exam will not be easy. Exam will not feed you the right answer, right? It will also try to give you confusing options, right? So most of you will tend to mark a date that falls on the International Women's Day, that falls on the 8th of March, but the correct answer here is 7th of March 2022. 7th of March 2022, to enroll out of school adolescent girl इस age group में अवेयरनेस एंड इंसेंटिवाइजेशन कैंपेन है, काउंसलिंग होंगे, रेफरल्स होंगे, एंड जितनी ज़्यादा लड़कियों को कोई जो अवेयरनेस कैंपेन एजेंसी रन कर रही है अगर वो वापस ले आती है स्कूल तक तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा. ओके, दैट इज़ व्हाट इट बेसिकली रन्स ऑन. ओके, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 7th of March. It was launched on 7th of March, and agencies like UNICEF, Ministry of Women and Child Development, right, Beti Bachao Beti Padhao scheme, all these agencies actually sponsor the scheme. ठीक है, UNICEF है,
क्राई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Now you see the very impact of scheme like Beti Bachao Beti Padhao. Beti Bachao Beti Padhao has been implemented so intensively in our country, so much that 2011 के ही census में male women child sex ratio कितना था? That is female is to male 1020 upon 1000. Now this is the first time in the country, in the history of India, that now National Family and Health Survey Report 5 जो कि 2021 में रिलीज हुआ था, that also indicates an improved sex ratio, that is women per 1000 males, the number of females per 1000 males. Okay, so all these facts are there. इसके अलावा और कौन कौन की सी important schemes हैं जो target करती हैं towards the education of the girl child? ये adolescent girls हो गई. Otherwise सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है. ये भी इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेरेंट्स हु एनकरेज द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. 10th तक हो जाता है तो उनको इंसेंटिव अवार्ड प्राइज मिलता है. 12th तक पास हो जाती है तो अवार्ड प्राइज मिलता है. to encourage the education up to the level of what? Up to the level of graduation. अब ऐसी schemes का impact क्या पड़ता है? बहुत सारे impacts पड़ता है. Women get educated, they get empowered, they would want to join a job. They would want to join a job, they would want to work, get independent. तो क्या फर्क क्या पड़ता है? Number one, सबसे पहला फर्क पड़ता है population control पे. Now the girl who was getting married at the age of 21 and having children till her reproductive age, okay, till 30, 40, she is having children, 4, 5 children per family. That used to do what? That used to only increase the poverty burden, the burden on the children also, to get them educated, to feed them. It was an unsustainable style of living. Now that the girl is getting educated till the age of 24, वो graduation भी करी, post graduation भी करी, PhD भी कर रही हैं. What is happening? Their marriage is getting delayed. Their children, they are not having children until their 30s, right? अगर rural area की बात कर लूँ तो 28, 26, 28. Okay, so what is happening? Per family, the number of children are reducing. The burden of poverty is reducing, right? Basic होता क्या है? Then the health of the mother, the health of the baby also improves, right? Per woman, one child or maximum 2 child, it is a very healthy and a sustainable option for the future. Okay, there is less case of child malnutrition, there is less number of cases related to child wasting and child stunting. अब child wasting and child stunting होती है, अगर वो adulthood तक कैरी करी जाती होती है तो disability के cases बहुत सारे पड़ जाते हैं, demographic dividend पे बुरा असर पड़ जाता है, productivity hamper होती है. तो these small schemes, they actually have an impact on a longer run. लंबे समय तक उनका impact हमारी country पे देखने को मिलता है. So yes, with which of the following is the PM Mitra scheme related? तो अब PM Mitra के बारे में आप सबको already पता होना चाहिए ideally, but do let me know PM Mitra scheme इनमें से किस sector से related है? PM Mitra है क्या actually? What is the full form of? If you know the full form of PM Mitra scheme, you would be able to answer this question correctly. इसका करेक्ट आंसर क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है पीएम मित्रा स्कीम. तो पीएम मित्रा, एज यू कैन रीड द फुल फॉर्म हियर, प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क्स. पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क्स है पीएम मित्रा. एक्चुअली ग्रीन फील्ड. गुड मॉर्निंग, सो वेलकम टू द सेशन. सो पीएम मित्रा बेसिकली ग्रीन फील्ड टेक्सटाइल पार्क्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट एग्जिस्ट इन द रीजन. सो जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसी तरह ये टेक्सटाइल पार्क्स भी established किए जा रहे हैं for all the manufacturers of important exportable textiles in our country. Okay, so which of the following sector textile से related है? Infrastructure, world class infrastructure facility, incentive based park है ये. So ये important क्या है इस स्कीम के बारे में? So मल्टी फाइबर अग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा. WTO में है मल्टी फाइबर अग्रीमेंट. ना मल्टी फाइबर अग्रीमेंट
is a provision that actually allows developing countries to export their textiles to the developed country without any import duty, right? Import duty पे काफी सारे exemptions हैं. अब China, Bangladesh and India, at the time this agreement was signed, they were categorized under developing countries. Now China is also an advanced emerging market economy. India is also an emerging market economy. Okay, but what happened was कि multi-fiber agreement and textile global share में जो textile market है उसको इंडिया सबसे पीछे उसमें चला गया, जबकि हमारी कंट्री में textiles का ट्रेडिशन बहुत ही ज़्यादा रिच रहा है हमेशा से. The silk of China, the cotton of Bangladesh, even Vietnam, countries like Vietnam, China and Taiwan and Bangladesh, these countries have left India behind when it comes to the global textile share, when it comes to the textile share in the global world trade. ठीक है, सिल्क, कॉटन, उन सबको पीछे छोड़ दिया. इंडिया is actually not one of the biggest exporter of textiles now. तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, उस चीज को प्रमोट करने के लिए, यस, पीएम मित्रा स्कीम इज आल्सो देयर. उसके अलावा वी आल्सो हैव आवर नेशनल जियो टेक्सटाइल मिशन इन प्लेस. नेशनल जियो टेक्सटाइल मिशन जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था. नेशनल जियो टेक्सटाइल मिशन जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था टू प्रमोट the manufacture and growth of technical textiles in the country. Technical textiles, those textiles जैसे PPE kit हो गया, mask हो गया, technical textiles that are used in cars and automobiles and other manufacturing units, studios में use होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? Technical textiles. So yes, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए we also have our national geotextile mission in place. Okay, so all these. Now let's come down to another very interesting question related to government schemes only. किसान रेल में इसके बारे में कौन से statements true हैं या correct हैं? Can anyone tell me in the comment below? Let me sit down for a while. किसान रेल से related इनमें से कौन से statements correct हैं? Let me know. Yes, all of the above statements are correct. 2020-21 के यूनियन बजट में ही लॉन्च हुआ था. पहला किसान रेल देलवाई टू दानापुर. Many people confuse it with तेलंगाना. तेलंगाना is not the correct answer. तेलंगाना से स्टार्ट हुआ था. पहला क्या? तेलंगाना से JNPT पोर्ट तक, JNPT ट्रस्ट तक. ओके. सो किसान रेल तेलंगाना से JNPT तक. पहला banana special train was started to enable the export of bananas from the villages in Telangana to Jawaharlal Nehru port. तो direct refrigerated train start हुई थी, but that was not the official किसान रेल. Okay, officially किसान रेल 2022-2021 के बजट में लॉन्च हुई थी from देवलाली in महाराष्ट्र to दानापुर in बिहार. Refrigerated coaches हैं तो जितने भी perishable which question was asked in the interview, please be more specific. Others will also get to know about it. Okay. Refrigerated coaches हैं, it will help in the transport of perishable agricultural commodities. किसान रेल, it was the first, ये पहली commodity train है इंडिया में. मतलब अभी तक जितनी ट्रेन्स है वो फ्री ट्रेन्स, कार्गो ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स, बट कमोडिटी ट्रेन, कमोडिटी मीन्स पेरिशेबल आइटम्स. ओके, पेरिशेबल आइटम्स की किसान रेल पहली कमोडिटी ट्रेन है. अच्छा, किसान रेल, it was asked in the interview as well. So yes, of course, then it makes it all the more important. ठीक है, so all of these statements are true about किसान रेल्स. इसके अलावा और कोई भी important point है जो मिस हो रहा है, जो important है किसान रेल से related? Because through these options I have tried to cover all the important key points that are crucial and that can be asked in the exam also as far as किसान रेल is concerned. तो because it was asked in the interview, obviously probability है कि इस बार भी पूछा जा सके, because again the government has also published a report कि इस बार according to the report of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Kisan Rail has managed to expand its network across as many states as possible as you can count in the country. Okay, not all the states but at least 10-15 states तक Kisan Rail अब
वर्क करती है अच्छे से, एंड इट हैज बीन ट्रांसपोर्टिंग मिलियंस एंड टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. सो यस, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. किसान रेल रेफ्रिजरेटेड कोर्सेज है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय मित्रास कौन है? हु आर द न्याय मित्रास? हु आर द न्याय मित्रास? कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो? न्याय से आप समझ सकते हो कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड हो सकती है? या तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दोनों में से कोई भी एक. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ये इनिशिएटिव है. तो न्याय मित्रास बेसिकली वो लॉयर्स हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, तो 15 साल से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में. यस, करेक्ट करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर. 15 साल से ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट पेंडिंग कोर्सेज हैं, हाई कोर्ट केसेज हैं हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, उनके स्पीडी डिस्पोजल के लिए न्याय मित्रा स्कीम लॉन्च किया गया है फॉर मोर देन 15 ईयर्स. For speedy disposal of those cases for more than 15 years, Nyaya Mitra scheme has been launched. Okay, now Union Ministry of Law and Justice has actually launched a scheme in 2017. So you can read some of the more infographic है ये न्याय मित्रा के बारे में. So officially उनको district facilitation centers के नाम से जाना जाता है. न्याय मित्रा actually head the district facilitation centers. बेसिक प्रायोरिटी रहती है 10 years old पेंडिंग केसेस को सॉल्व करना. फिर सेकंड नंबर पे आता है 15 year old केसेस को सॉल्व करना. एंड द कोर्ट्स दैट दे आर कंसर्न्ड विद एक्चुअली हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. Okay, so you can have a look at the performance. I can have a look at the network of Nyaya Mitras. The Union Ministry of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju, he belongs to the state of Arunachal Pradesh and his constituency is Arunachal West. Yes, Rajasthan has got an AI powered tool. Other than that, उसके अलावा और क्या important initiative है? Tele-law. Tele-law is also another important initiative of Ministry of Law and Justice. So न्याय बंधु क्या है? प्रो बोनो लीगल सर्विसेज. न्याय बंधु जो लोग लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग लीगल सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए न्याय बंधु स्कीम लॉन्च किया गया है. ओके, समता न्याय केंद्र is also again to make justice, law and justice accessible to ट्रांसजेंडर पीपल के लिए जस्टिस और लॉ को एक्सेसिबल बनाने के लिए समता न्याय केंद्र लॉन्च किया है, जो कि एक नेटवर्क है ऑफ पैरा लॉयर्स एंड लीगल पैनल लॉयर्स. पैरा लॉयर वॉलंटियर एंड पैनल लॉयर का जो नेटवर्क है, टारगेट क्या करता है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को. ओके, समता न्याय केंद्र. Okay, Ministry of Food Processing has signed an MOU with which of the following countries to enable capacity building? Food processing में capacity building को enable करने के लिए Ministry of Food Processing Industries ने इन सभी countries के साथ एक MOU sign किया है. Who is the Union Minister of Food Processing Industries? Do let me know in the comments below. Obviously, a lot of important initiatives have been undertaken by the Union Ministry of Food Processing Industry. Vietnam, Taiwan, so we all know quality, skill development. Yes, that is correct. काफी सारे एरियाज में डाइवर्सिफाइड है. Which among the following statements is true about the conservation and development of sustainable management of medicinal plants? I think we have already done this question. रिवाइज हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं. पहला गलत है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. दूसरा, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का स्कीम है ये. ठीक है. Now let's have a look at some of the important news items related to science and technology. Science and technology से कुछ important news item है. इकोमित्रम ऐप. इकोमित्रम ऐप किससे रिलेटेड है? इकोमित्रम ऐप is actually related to which of the following? Forest conservation restoration, voluntary beach cleaning, electronic waste replacement. सबसे पहली बार लॉन्च किसने किया है? करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी.
इको मित्रम ऐप कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, पहले आप ये बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इज इट? इको मित्रम ऐप has been launched by the, again it has been launched by the Ministry of Earth Sciences. Ministry of Earth Sciences, Union Minister Dr. Jitendra Singh. Aim of Eco Mitram app is to encourage beach cleaning among people. Voluntary beach cleaning, पर्यावरण संरक्षण के लिए, बीचेस के पर्यावरण संरक्षण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इको मित्रम ऐप लॉन्च किया है. Okay, so yes, it'll be collaborating with these many agencies, especially NDMA जैसी agencies. They are kind of important as far as initiatives like Eco Mitram apps are concerned. Now, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. महराज अहमद खान इंडिया में ही हैज़ मेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड इन एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट. वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा था जिसमें इंडिया को इस बार पहली बार गोल्ड मिला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? करेक्ट आंसर हियर इज स्कीट में इंटरनेशनल स्कीट स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें महराज अहमद खान, who belongs to I guess Manipur, he has won a gold and he has defeated a player from South Korea. He has defeated a player from South Korea to win a gold. Okay. Defense, मिलान, कॉन्कूर एंड इनवर इनमें से कौन सी कैटेगरी के डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं? कौन सी कैटेगरी के डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं ये तीनों? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. क्या मेन बैटल टैंक्स हैं, फ्रिगेट हैं, कॉरवेट हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? करेक्ट आंसर हियर इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है मिलान, इनवर एंड तोमर, जिनको मैन्युफैक्चर किसने किया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड. भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इनको मैन्युफैक्चर किया है, मिलान, कॉन्कूर एंड तोवर. टैगलाइन आप देख लो, BDL मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 100% ओन्ड PSU है. Yes, ATGM है. The force behind peace is the correct answer. Is the tagline of Bharat Dynamic Limited. Retired General Siddharth Mishra is the CMD, that is Chair and Managing Director of Bharat Dynamic Limited. So this is some information of each of these. एक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव, तीनों ही एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्स हैं. ओके, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की कैटेगरी में आता है. एक मैन पोर्टेबल है, एक मैकेनाइज्ड है, 2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है और एक मैन पोर्टेबल है. ओके, इट्स गुड दैट यू नो अबाउट इट. सिद्धार्थ मिश्रा इज द CMD, चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड. डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन से स्टेट में सेटअप होने जा रहा है? डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज बीइंग सेट अप इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु अदर देन उत्तर प्रदेश. Okay, so I think we've already done this. उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? UP, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. UPEIDA is the implementing agency of the defense corridor project in उत्तर प्रदेश. तो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का है, बट एक्चुअली में अभी तक 1,000 करोड़ हैज बीन ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड इन द डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट. Other than that, Tamil Nadu National Defense Industrial Corridor is the implementing agency of that, and of course investments worth rupees 3,000 crore has already been done towards that objective. Now, हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, कंट्री का पहला हर घर जल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कंट्री का पहला हर घर जल स्टेट वाज गोवा. गोवा ने फंक्शनल फंक्शनल टैप वाटर रूरल 2.4 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स तक फंक्शनल टैप वाटर पहुंचाने का तक का काम अचीवमेंट सबसे पहले हासिल किया था कौन से स्टेट ने? गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फंक्शनल
tap water to 2.4 lakh rural households in its jurisdiction or in its state. Now, the question is asking you which is the first district, which is the first Har Ghar Jal certified district of the country. So, the district is actually in Madhya Pradesh, district is Burhanpur. Burhanpur is the first Har Ghar Jal certified district. Goa was the first Har Ghar Jal certified state. So ये आप याद रखना, बहुत ज़्यादा important है from the exam point of view. 100% rooftop, 100% tap water. I'm again and again saying rooftop solar panels. I don't know why, but yes, functional tap water. Functional tap water 100% तक का target achieve कर लिया है. Especially tribal. Now you know Central India. Central India is known as the tribal belt of our country. Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, some parts of say Maharashtra, Gujarat. Okay, so yes, these are all. Burhanpur is Har Ghar Jal certified, first Har Ghar Jal certified district in the country. Okay. मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड है. 68th नेशनल फिल्म अवार्ड के अकॉर्डिंग विच इज द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन आवर कंट्री. फिल्म फ्रेंडली स्टेट सबसे पहला हमारी कंट्री में ये तीनों है एक्चुअली. इन दो को सर्टिफिकेट मिला है, एक को रजत कमल. रजत कमल इज एक्चुअली एन अवार्ड प्राइज. Madhya Pradesh has won an award prize along with the certificate. Other than that, Uttarakhand and Uttar Pradesh are two certified most film-friendly states in our country. So correct answer यहाँ पे हो जाएगा A, B and C. A, B and C. Certificate, Rajat Kamal and certificate. Rajat Kamal is actually a cash prize. Sudhanshu, it is actually, that is why I have asked this question. तीनों है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एज वेल एज मध्य प्रदेश. द ओनली डिफरेंस इज मध्य प्रदेश को कैश प्राइज में मिला है 50,000 से 1 लाख. 50,000 से 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है इन रजत कमल अवार्ड. यस, करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट एक्टर. कौन है? सूर्या एंड अजय देवगन हैव एक्चुअली दिस टाइम वन द Best Actor Award jointly. They are sharing the Best Actor Award. Other than that, Best Actress Award, you all know Aparna Baramurali. I don't know her, but anyway, Best Popular Film Tanaji. Best Director Sachidanand KR. Best Female Singer Nanchamma for the same movie AK Ayyapuyam Koshiyam. And Best Male Playback Singer is Mr. Rahul Deshpande. So these were the some important results of what? National Film Capital, National 68th National Films Award. Okay. Now today's currency, country currency capital आज की क्या है? मॉरिशस है. मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर प्रबिंद जागुनाथ. दिस इज द फ्लैग ऑफ मॉरिशस. Mauritian rupee is the currency and the capital here is Port Louis. Port Louis is the capital of Mauritius. क्यों है न्यूज़ में? Union Minister of Agriculture and his counterpart, Minister of Agriculture in Mauritius also, they both met together. They both met in a conference to extend talks for food security. Joint food security mission है इंडिया और मॉरिशस का. Food security, food processing in agencies. It is not an LGBTQ flag. Yeah, you're talking about a flag of a country. Don't make fun of it. So yeah. But yes, it is actually a good mnemonic. It is actually a good mnemonic. याद रह जाता है इससे, याद रह जाता है. Although country flag आता नहीं है एग्जाम में, मेन एजेंडा ये रहता है करेंसी क्या है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाट इज द कैपिटल. ओके, सो ये न्यूज़ में क्यों आया है? न्यूज़ से ही, जैसे मैंने कहा कि जीके डिराइव होती है, करंट अफेयर से स्टैटिक जीके डिराइव होती है. तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है दैट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड हिज काउंटरपार्ट इन मॉरिशस, दे बोथ held a joint discussion to extend the provision of food security missions in our country. So आज के स्टैटिक जीके पोर्शन के साथ हम लोग अपना आज का करंट अफेयर्स सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. साइनिंग ऑफ. कीप रिवाइजिंग.
नाबार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू, टेक केयर एंड